तो इस वीडियो में हम 12th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इसके हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे और उनमें का डिफरेंस देखेंगे, जो कि ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट टर्म हम देखने वाले हैं वो है डिफॉर्मेशन। तो बेसिकली डिफॉर्मेशन ये चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी होता है। और वो डायमेंशन का मतलब है कि शेप, साइज या फिर शेप एंड साइज बोथ। तो इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। द चेंज इन डायमेंशंस that is sorry shape, size or both of a body when an external force is applied on it. इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अगर कंसिडर कीजिए कोई एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो अगर उसका शेप कुछ इस तरह चेंज होता है तो ये शेप और साइज दोनों चेंज हुए तो उसे हम कह सकते हैं कि ये चेंज इन डायमेंशन है। और इस तरह से अगर एक्सटर्नल फोर्स एफ के एप्लीकेशन की वजह से बॉडी का डायमेंशन चेंज हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी डिफॉर्म हुई है, द बॉडी इज़ डिफॉर्म। द और उसी में हम डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म, वो है डिफॉर्मिंग फोर्सेस। द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी विच कॉजेस इट्स डिफॉर्मेशन। मतलब बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स, ये यहाँ पर हमने एफ लिया है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इसे हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स विच कॉजेस इट्स डिफॉर्मेशन। एफ कॉजेस डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स applied on a body which causes its deformation is called deforming force। तो डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो दो पॉइंट्स है, ये हमें इलास्टिसिटी चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि जो इलास्टिक बॉडीज़ है उन पर हम जब भी प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका शेप चेंज होगा, उसे हम डिफॉर्मेशन कहेंगे। और जो फोर्सेस अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, उसे हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करेंगे। इलास्टिसिटी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी खुद का जो डायमेंशन है वो चेंज करने के लिए अपोज करती है। और जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस उस पे के जो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्सेस है वो जब रिमूव होंगे तो वो बॉडी खुद की पोजीशन पर रिगेन करती है, खुद की ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन करती है, उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। तो अगर इलास्टिसिटी का डेफिनेशन देखेंगे, द प्रॉपर्टी of a body
by virtue of which it opposes change in its original dimensions and regains regains its original dimensions on removal of deforming force is called elasticity. तो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो अगर ये बॉडी है, इसको हम इलास्टिक बॉडी कब कहेंगे, जब उस पर अप्लाई किए हुए फोर्स की वजह से उसके डायमेंशंस में जो चेंज होंगे, ये जो चेंज है ये अप्लाइड फोर्स की वजह से होंगे। अगर ये जो शेप है बॉडी का, जब ये फोर्स F हम रिमूव करेंगे तो अगर उस बॉडी ने उसके ओरिजिनल डायमेंशंस वापस से रिगेन करने की कोशिश की तो उस बॉडी को हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी, और द बॉडी पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the changes in its original dimensions and regains its original dimension of on the removal of deforming forces. This is nothing but the property of elasticity. और इलास्टिक बॉडी को डिफाइन करेंगे, the body which possesses the property of elasticity is called elastic body. Simple, the body which possesses the property of elasticity is called elastic body. Let us define perfectly elastic body. तो सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, हम फिजिक्स लर्न कर रहे हैं तो नथिंग इज़ आइडियल इन दिस वर्ल्ड, सो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। बट हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि इसी के रेफरेंस से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। सो द बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। द बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस completely when deforming force is removed. It's called perfectly elastic body. Let us define plasticity. The property possessed by a material or a body by a
material or a body by virtue of which it gets easily deformed when even when small deforming force is applied, but cannot regain its original dimensions when the deforming forces are removed. Removed is called as plasticity. So this was the property of plasticity, and the body which possesses this property is called plastic body. The body which possesses this property of plasticity is called plastic body. So now if we want to take the examples of plastic bodies एग्जाम्पल्स, तो हम ले सकते हैं मड, जो कि होता है कीचड़, क्ले, पुट्टी जो कि कलरिंग से पहले दीवारों में लगाते हैं, डफ रोटियां बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं वो डफ, वैक्स और ऐसे कई सारे ये एग्जाम्पल्स। तो ये था प्लास्टिसिटी के बारे में। तो अब देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक बॉडीज़ एंड प्लास्टिक बॉडीज़, जिसके वजह से बहुत सारे जो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बीच में का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ the body which possesses the property of elasticity is called elastic body. Property of elasticity। और प्लास्टिक बॉडीज में फर्स्ट पॉइंट आएगा the body which possesses the property of plasticity। और plasticity is called as plastic body। नाउ द इलास्टिक बॉडीज में पॉइंट आएगा कि दिस बॉडीज आर डिफॉर्म्ड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड एंड रिगेन्स इट ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द फॉर दिस फोर्सेस आर रिमूव्ड। दैट इज सेकंड पॉइंट आएगा रिगेन्स ओरिजिनल डायमेंशन when deforming forces are removed, and plastic body does not regain its original dimension when deforming forces are are removed। इलास्टिक बॉडीज में थर्ड पॉइंट आएगा फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी लार्ज फोर्स इज नीडेड। लार्ज फोर्स
needed for deformation. और प्लास्टिक बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन के लिए इवन अ स्मॉल फोर्स इज सफिशिएंट. स्मॉल फोर्स इज sufficient for deformation. अब इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो इन द केस ऑफ इलास्टिक बॉडीज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आर सेट अप इन द बॉडी. जब भी हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, कंसिडर कीजिए ये बॉडी है, उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी उस बॉडी पर अप्लाई करेंगे, जो कि उसकी ओरिजिनल शेप उस बॉडी को रीगेन करने के लिए वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो उस बॉडी को ओरिजिनल शेप रीगेन करने के लिए कोशिश करेंगे. तो जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो होगा internal restoring forces are set up in the body when the body is deformed. Internal restoring forces are set up, and in this case plastic body the internal restoring forces are negligible. Internal restoring forces. Now the time comes for the intermolecular forces. Let us change the page. Now let's talk about the fifth point. It's about intermolecular forces. So इलास्टिक बॉडीज़ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, स्ट्रांगली खींचते हैं. सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग फॉर इलास्टिक बॉडीज, and for plastic bodies intermolecular forces are weaker. Now the sixth point will be of examples of plastic bodies जो कि हमने पहले ही देख लिए है. रबर, स्टील वायर, स्प्रिंग, water, air, and so on, etc. The examples for plastic bodies are wax, putty, mud, clay, etc. So this was about elasticity basics. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, keep watching our videos, and if you have any problem, do let me know in the comment section. Thank you so much.